Hello students, in today's video we are going to learn about oxidation number. But before we learn oxidation number, I would like to discuss the electronic configuration of noble gases and the reason for their stability or their inertness. Okay, so let's start. If you look at the electronic configuration of the noble gases, let's start from helium. Okay. Helium has got the atomic number 2 and its electronic configuration is 2. That is, it has got 2 electrons in its valence shell. Next noble gas is neon. Its atomic number is 10 and its electronic configuration will therefore be 2,8. Next is argon. Its atomic number is 18. And therefore, its electronic configuration becomes 2,8,8. Next is your krypton. Its atomic number is 36. So, its electronic configuration would be 2,8,18,8. The sum comes out to be 36. The next one is xenon. Its atomic number is 54, thus the electronic configuration would be 2,8,18,8. Now what do we find? We find that each of these noble gases except helium have 8 electrons in their valence shell. The valence shell has got 8 electrons, see? Okay, and helium has got 2 electrons in its valence shell. And we know that these noble gases, why are they called noble? Because they are very inert, okay? They are very inert. What gives them this stability? Probably it is because of the 8 or 2 electrons they have got in their valence shell, which gives them this stability. So the other elements also want to gain this noble gas configuration. Okay, so to gain this noble gas configuration, they either lose electrons or they gain electrons or they share their electrons, their valence shell electrons. उन्हें भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, बिकॉज वो भी नोबल गैसेस की तरह इनर्ट होना चाहते हैं. तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उन्हें या तो इलेक्ट्रॉन्स उन्हें देने पड़ सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. जैसा कि हम समझ लेते हैं विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम को अगर हम देखें तो इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और कन्फिग्रेशन 2,8,1 होगी. आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर इसे तो चाहिए या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम को दे दे जिसे इस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके वैलेंस शेल में बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम एक नोबल गैस कन्फिगरेशन या अपनी ऑक्टेट को इस तरीके से कंप्लीट रखेगा. ठीक है, सो सोडियम हैज़ गॉट अ टेंडेंसी टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय giving away its 1 electron to the one which needs. Let us consider the case of chlorine. Now chlorine has got the atomic number 17. Okay, so what would be its electronic configuration? Its electronic configuration would be 2,8,7. Now you can see it has got 7 electrons in its valence shell. अगर इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर ये नोबल गैस कन्फिगरेशन हो जाएगी. तो क्लोरीन विल form a bond with sodium and will take away its 1 electron and fulfill its octet. So what happens? Chlorine becomes negatively charged and it completes its octet and
becomes 2, 8, 8, and the sodium was 2, 8. So what happens? Sodium gives away its one valence shell electron to chlorine, and this way sodium chloride is formed. This was the case when there was a giving away of electron and taking of electron, gaining of electrons, but there are cases where the electrons are shared. Okay, so let's talk about sharing of electrons. Let's talk about the very simple compound water. Now water consists of one atom of oxygen and two atoms of hydrogen. Now how many valence shell electrons are present in oxygen? Oxygen has got the atomic number 8, so 2, 6 will be the configuration. So it has 6 electrons in its valence shell. So I would denote the 6 electrons in this way. Okay, so these are the 6 electrons, and hydrogen has got the atomic number 1, so it has got only 1 electron in its valence shell. Now you can see that these atoms, now oxygen can fulfill its octet because it has got 6 electrons, so it needs 2 more electrons. So what it does is that it shares its 1 electron with one hydrogen atom and another 1 electron with another hydrogen atom, and it forms a covalent bond. So in this way, what happens? The oxygen has got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons, and the hydrogen also, because of the sharing, has got 2 electrons. Okay, and this bond formed by the sharing of electrons is a covalent bond. Now here we need to know one more thing, that is electronegativity. Okay, now what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons in a covalent bond towards itself. Okay, so what happens, मतलब कि किसी भी एटम की अगर टेंडेंसी हो कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करके रखे, तो जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने की, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो ये पाया गया है कि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. So we can say oxygen is more electronegative as compared to hydrogen. तो ये जो shared pair of electrons है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ओर बिलोंग करेंगे. तो ये मैंने इसलिए समझाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सारी चीज़ें हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को जानने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वो ये है कि हमें ये मान करके चलना है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी ओर बिलोंग करेगा. ठीक है, तो इस केस में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की ओर बिलोंग करेंगे, और ऐसा होने के कारण जो है वो बिकॉज ऑफ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन विल गेन अ चार्ज. ओके, ये मान करके चला गया है ऑक्सीजन विल गेन अ चार्ज दैट विल बी -2, एंड हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ यू कैन से कि हाइड्रोजन से दूर जा रहा है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास बिलोंग नहीं करता है, तो वी कैन से हाइड्रोजन विल गेन अ +1 चार्ज ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स. चलिए अब हम चलते हैं मेन चीज़ में जो कि ऑक्सीडेशन नंबर है. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि ये इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. यानी कि ये किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है ये ऑक्सीडेशन नंबर. और ऑक्सीडेशन नंबर जानने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड में है वो पूरी तरीके से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state of an element in a particular compound can be defined as the charge acquired
as the charge acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from other atoms in the molecule। यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशंस की वजह से जो चार्ज एक एटम गेन करे उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में ऑक्सीजन -2 चार्ज गेन करेगा इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन +1, ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स विल गेन +1 चार्जेस। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनवेरिएबली काफ़ी समय ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज़ किया जा सकता है। कभी ऑक्सीडेशन नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप यूज़ करते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ किस लिए किया जाता है? टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ओके, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर हम जानेंगे कैसे, इसके लिए जो रूल्स हैं उन रूल्स के बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है और जिसके लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। सो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू नो द रूल्स अबाउट finding out the oxidation number, and if you find that the video was useful, please like my video, please share my videos, please subscribe to my channel if you haven't done yet, and please press the bell icon. Thank you, dear students.